So hello guys, मेरा नाम Izhaan Khan है. Currently I'm studying in IIT Patna and I'm pursuing my civil and environmental engineering degree. Okay, I'm in my second year right now. So let's start today's session. So as you all know that we were doing chapter 6 from NCERT Exemplar and I did 12 questions in my last session. So I'll start from there only. So let's see what is the first question. So the question is, which of the following diagrams represent variation of total mechanical energy of a pendulum oscillating in air as a function of time. Okay. So सबसे पहले तो we should see that what do you mean by total mechanical energy? Total mechanical energy is nothing but the sum of kinetic energy slash potential energy, right? Can be written as like this: kinetic E plus potential E, right? So now let's analyze what is the state of a pendulum when it is moving to and fro, right? So sorry, this is a fixed support, right? This is my pendulum. So it moves to its extreme position like this, another extreme position like this, and it is moving to and fro. So at this point, the potential energy is maximum and kinetic energy is zero because velocity is equals to zero at the final point, maximum point. So at this point, we can say that PE max, let's say E, and kinetic energy zero. So total mechanical energy at point number one, total mechanical energy is equals to E, kinetic energy is zero. So we'll just leave it like that. At point two, we can say that the potential energy is zero. Why it is zero? Because we are calculating potential energy from this base point. So what is potential energy? mgh, right? And what is this h? This h is our reference height we take in this. Like potential energy is never zero. Whenever you put a ball on the ground, it seems to be zero on the floor that you are in. But if you drop it from the balcony outside your house, it will drop down. So potential energy is zero with the reference of what you take. So I'm considering my height from the bottommost point. So when the pendulum comes back to this point, I will say that my potential energy is zero. Okay. So at this point, P is zero. So total energy is what? Potential energy zero plus kinetic energy. What will be so now by conservation of energy, we know that the total energy remains conserved, right? So if my potential energy is getting to zero, that means that E energy, which was the total energy, it is going towards kinetic energy. Okay. Only the form changes, right? Energy remains the same, but form changed. Like here it was in potential. This pendulum bob had much potential, so it had energy E, but velocity zero, kinetic energy is zero. At the bottommost point, potential is zero. So all the E, the total energy E, is converted into kinetic energy, right? And same goes for the another point, third. At this point, our kinetic energy will again be zero, and the potential energy will be E. So this is the case for a pendulum when it is placed in vacuum, when there is no air drag, right? If you leave a pendulum in space or move, what happens is there is no air to resist the movement of the bob. So the motion of the bob is free. So in that case, if you give it any initial energy, E, you push that bob with an energy E, it will move to a certain position and then come back. And it will infinitely move because total mechanical energy remains conserved. So this energy E that you have provided will first become potential energy, then become kinetic, then become potential, and two flow. It will continue till infinity. So, but what happens is in real world, what happens is there is air drag. So due to that, what happens? The pendulum initially given some energy, finally comes to a rest. Why? Because some energy is lost due to air drag. सो उस एनर्जी को हम लोग लूज कर रहे हैं. सो आवर टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू another kind of energy. What is that kind of energy? We are giving energy to the air particles we collide, our bob collides with. So collision, and this generates heat.
So our energy is getting converted to heat. That is why finally, when moving till infinity, our E gets converted into heat. So in this case, our total mechanical energy slowly it is decreasing. Initially it was some E, but with time, as time reaches infinity, it will tend to a zero. So this is our correct graph. Now let's analyze some other graphs as well. Wait a minute. Let's get into something first. Yeah, so in this question, I was explaining you that how the total mechanical energy is getting to zero as time tends to infinity, because energy is getting lost in the form of heat due to air drag. Okay, so let's see more. Okay, so as you see this graph, let me tell you about this graph. What this graph is saying? This graph is saying that total mechanical energy E is something here. Okay, like you have provided some energy E naught at time t equal to zero. But as time passes by, first it gradually increases, then it decreases. Okay, it moves like this. So this is wrong. Why? Because we have provided energy E naught. So it cannot increase. If this is increasing, it means that some further action is being taken on that bob. Like किसी और ने भी आके उसे धक्का लगाया है. Something like that is happening. That is why total mechanical energy is getting increased. So this is wrong, right? And for this question, okay, third one. So you may be get confused in this graph and this graph. In both the graphs, our total mechanical energy is getting to a zero and starting from a constant energy E naught. But आप यहाँ पे देखोगे ना, तो as time passes by, हम लोग की एनर्जी बहुत धीरे धीरे करके डिक्रीज हो रही है, और फाइनली जब वो स्लो हो गया है तो बहुत तेज डिक्रीज हो रही है. जब आपका पेंडुलम टाइम के साथ स्लो हो चुका है, तब उसका टोटल मैकेनिकल एनर्जी लॉस बहुत ज्यादा है. Slopes कंपेयर कर सकते हैं हम लोग. स्टार्टिंग में स्लोप इज लाइक द स्लोप एट द स्टार्टिंग इज नॉट दैट स्टीप विच इज एट द एंड. सो ये गलत है. क्यों गलत है? क्योंकि जब हम लोगों का जो बॉब है वो ज्यादा वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा, तो वो ज्यादा एयर पार्टिकल से कोलाइड कर रहा होगा, तो वो उसको ज्यादा फ्रिक्शन दे रहा होगा, तो उसको ज्यादा हीट कर रहा होगा, तो उसकी एनर्जी लॉस एट द स्टार्ट when it has much more velocity, it will be greater. And as it starts to move slowly, तो उसका कोलेशन इतना ज्यादा मतलब हार्श नहीं होगा, इतना ज्यादा वो हीट नहीं जनरेट करेगा. सो इट विल टेंड टू अ जीरो एज यू मूव टू एन एंड. और ये तो फिर जीरो ही, ये तो फिर गलत ही है, बिकॉज इट इज a total mechanical energy abruptly gets to a zero point. So this is wrong. That is why this one is correct, right? So let's move on to the next question. A mass of 5 kg is moving along a circular path of radius 1 meter. Okay, mass of 5 kgs. The mass moves with 300 revolutions per minute. 300 rpm. Okay, its kinetic energy would be, okay, 300 rpm का मतलब है 300 into 2 pi divided by 60. ये उसका रेडियंस में वेलोसिटी. 300 rpm टाइम रेडियन बाय टाइम. ओके, सो ये हम लोग की ओमेगा आ गई. तो ओमेगा 5 5 10 pi. 10 pi is our omega. Alright. So kinetic energy क्या होती है? Rotational kinetic energy is similar to our kinetic energy in linear motion. Half m omega square. So half into 5 into 10 pi the whole square. So which comes out to be nothing but 250 pi square joules. 250 pi square. Yes, we have it. Right. So this is the correct answer. Okay, let's move on to the next question. A raindrop falling from a height h above ground attains a near terminal velocity when it has fallen through a height of 3h by 4. Which of the diagrams shown correctly shows a change in kinetic and potential within the drop during its fall up to the ground? All right. टर्मिनल वेलोसिटी सबसे पहले बता दूं, अगर फ्लूइड्स हम लोगों ने पढ़ा होगा. सो दिस mg डाउनवर्ड्स एंड दिस फोर्स ऑफ बॉयंसी अपवर्ड्स, इन सबको बैलेंस करते हैं. और 6 पाई ईटा आरवी, 6 पाई ईटा आरवी, इन सारी चीजों को जब हम लोग बैलेंस करते हैं तो वी टर्मिनल निकल के आती है, जो कि आपके फॉल में कांस्टेंट रहती है. एक वाटर ड्रॉपलेट को आप अगर बहुत ऊपर से ड्रॉप करोगे, या कोई भी चीज को बहुत ऊपर से ड्रॉप करोगे, तो आफ्टर
certain distance, after attaining a certain velocity, the velocity becomes constant for further motion, although there is an acceleration g. ठीक है, तो ये बस बेसिक से ऊपर से ओवरव्यू बताया है. You'll study this in detail in your fluids and further. So टर्मिनल वेलोसिटी का मतलब हो गया कि आपकी बॉडी ने एक कांस्टेंट वेलोसिटी अटेन कर ली है. बस इतना भी आपको समझना है, राइट? सो लेट्स सी द क्वेश्चन. वो कह रहा है हाइट h से उसने वाटर ड्रॉपलेट को छोड़ा. टर्मिनल वेलोसिटी इज फॉलन थ्रू हाइट ऑफ 3h/4. ये है टोटल हाइट h. ठीक है, और जब वो 3h/4 नीचे आ गया तो इस पॉइंट के बाद उसकी वेलोसिटी अनचेंज्ड है. यहां से यहां तक इतनी दूरी के लिए इसकी वेलोसिटी vt कांस्टेंट है. एक बात पता चल गई. अब देखते हैं आगे क्या है. विच ऑफ द डायग्राम करेक्टली शोज द चेंज इन काइनेटिक पोटेंशियल ऑफ द ड्रॉप ड्यूरिंग इट्स फॉल ऑन टू द ग्राउंड. ओके, सो मुझे कुछ ऐसा मिलना चाहिए कि हाइट h/4 के ऊपर आके, मतलब ग्राफ में हाइट नीचे से हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, तो h/4 के बाद काइनेटिक एनर्जी अनचेंज्ड है. अनचेंज्ड, ठीक है, क्योंकि vt कांस्टेंट हो गया है. टर्मिनल वेलोसिटी अटेन कर ली है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहेगी. हाइट के साथ गिरती चली जा रही है ग्राउंड. बात करेंगे इसके लिए. काइनेटिक एनर्जी चेंज होती जा रही, सारे गलत है. बट यू सी दिस वन, at h/4 you see our kinetic energy is getting to a constant. Okay, and after that it will just keep on moving in a straight line, but our potential energy is getting decreased, right? But आपकी kinetic energy forever तो होती नहीं जाएगी. At some point when potential energy is getting to a zero, when you are getting to the ground, then your potential kinetic energy will also get to a zero. So it is shown like this, but actually it will drop down to zero. So this one is the correct graph. Let me mark it, right? So let's see the next question. The next question is, in a shot put event, okay, an athlete throws the shot put of mass 10 kg with an inertial speed of 1 at 45 degrees from a height. Okay. Assuming the air resistance will be negligible and acceleration due to gravity, the kinetic energy of the shot put when it just reaches the ground will be. Okay. तो इसमें हम लोगों को भी क्या क्या दिया हुआ है. Let's say a man is standing. He has a shot put in his hand, and the trajectory is like this. Makes an angle of 45 degree with the horizontal, right? So initially इसकी हाइट दी हुई है ग्राउंड से कुछ, फ्रॉम हाइट ऑफ 1.5 मीटर अबव द ग्राउंड. 1.5 मीटर, ठीक है. assuming air resistance will be negligible and exclusion mass 10 kg initial speed all right. Okay, so now total maximum height हम लोग को इसमें कैलकुलेट करनी है या नहीं. 1 मीटर से 45 हाइट दी है, मैक्सिमम हाइट भी निकाल लेते हैं. तो मैक्सिमम हाइट के लिए आपके पास ट्रेजेक्टरी के भी कई सारे फॉर्मूले होते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन के. बट सबसे सिंपल मेथड मैं आपको बताता हूँ. इसकी वेलोसिटी आपको इस पॉइंट पर पता है, 1 मीटर पर सेकेंड, राइट? तो अगर मैं कह दूं कि मैं अपना बेस, जो मेरा पोटेंशियल एनर्जी जीरो की बेस लाइन है, उसको मैं ये लाइन मान रहा हूँ, डॉटेड लाइन. सो यहाँ से जो भी हाइट एच मेरी मैक्स आएगी, यहाँ पे उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी बोल, mgh मेरे शॉर्टपुट की मैक्स पोटेंशियल एनर्जी होगी. और यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, तो उसके पास कितनी एनर्जी है, हाफ एम वी स्क्वायर. और ये दोनों इक्वल होंगे ना, बाय द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज ऑलवेज कांस्टेंट, राइट? सो यहाँ से हम लोगों को मिल जाएगा. तो h इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाय 2g, एंड वी स्क्वायर इज 1 मीटर पर सेकेंड डिवाइड बाय 2 into 10. ओके, so it will be nothing but it will be nothing but 1 by 20, which is 0.5. No, it is 0.05 meters. तो ये हम लोग का एच भी हम लोग को मिल चुका है, राइट? फर्दर क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, हम लोग को निकालना है द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द शॉट व्हेन इट जस्ट रीचेस द ग्राउंड. हाँ, बेसिकली इतना करना ही नहीं था. ग्राउंड यहाँ पे है ना, दिस इज द ग्राउंड, राइट? यहाँ पे उसके पास एनर्जी है इतनी. लेट मी ड्रॉ इट अगेन. देयर इज अ मैन,
he has a shot put in his hand, which is 1.5 meters above the ground initially, and he gives him it a velocity of 1 meter per second. This is the trajectory, right? And finally, it comes to the ground. क्या आप मुझे यहाँ बता सकते हो एट पॉइंट ए एंड एट पॉइंट बी, पॉइंट ए पे टोटल एनर्जी कितनी होगी? सबसे पहले तो पोटेंशियल एनर्जी, अब मैं बेस लाइन से कैलकुलेट करूँ फ्रॉम पॉइंट बी, ये मेरा ग्राउंड है, यहाँ से मैं पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करना चाहता हूँ, तो सबसे पहले एम जी एच, तो एम जी एंड एच, फिर एच इज 1.5 प्लस हाफ एम वी स्क्वायर, एम आई करेक्ट? यही तो टोटल एनर्जी है पॉइंट ए, कैलकुलेट कर लेते हैं। तो मास मुझे दिया गया है 10 kgs, जी है 10, हाइट है 3/2, हाफ, मास है 10, वेलोसिटी है 1, 2 5 2 5 15 10 150 plus 5, so 155 155 joules is the total energy at A, right? So at point B, what happens is total energy at A will be equal to total energy at B. सिंपल सी बात है। तो इफ टोटल एनर्जी एट ए इज 155 joules एंड टोटल एनर्जी एट पी का मतलब हो गया पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, बट पोटेंशियल एनर्जी जीरो बिकॉज हाइट इज जीरो, आई एम कैलकुलेटिंग माई हाइट फ्रॉम द पॉइंट बी इटसेल्फ, ओके? So potential energy is zero, so that means that only we are getting the kinetic energy at B equal to 155 joules. Let's see if we have an option. Yes, we do have it, and it is the correct one. So let's move forward. First, I think there's a question on terminal velocity. Which of the diagrams correctly show the change in kinetic energy of an iron sphere falling freely in a lake having sufficient depth to impart a terminal velocity? Okay. So मैंने terminal velocity के लिए क्या बताया था आपको? Like something is falling down, right? मतलब ऐसे मत सोचो, ये याद नहीं करना पड़ रहा है, तो पढ़ोगे इसके बारे में. That what happens is there are forces on it. mgh is downwards. There's a force which depends on the velocity of the wall. 6 pi eta rv. This velocity term is coming in. आपकी जितनी ज्यादा वेलोसिटी होगी उतना ज्यादा अपवर्ड फोर्स लग रहा होगा, एंड वन मोर फोर्स, फोर्स ऑफ बॉयंसी, एफ बी. सो इन सारी चीजों को जब सॉरी इन सारी चीजों को जब बैलेंस आउट करोगे, so we get a terminal velocity, and after the body reaches its terminal velocity, its velocity does not increase. ये बात होती है. So our velocity gets to a constant after attaining that terminal velocity. तो इसमें देखते हैं which of the figures correctly show the change in kinetic energy falling freely in a lake having sufficient depth to impart it a terminal velocity. फिर से वही सेम केस है, kinetic energy बढ़ेगी बढ़ेगी बढ़ेगी, लेकिन आफ्टर सम टाइम वो कांस्टेंट हो जाएगी. क्यों? क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई है. बात समझ आ गई? तो इसके लिए भी सही है ये वाला ऑप्शन. ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. A cricket ball of mass moving with a speed, its middle held firmly at its position by the batsman. The ball moves straight back to the bowler after hitting the bat. Assuming that collision between the ball and bat is completely elastic and the two remain in contact for 0.001 second, the force that the batsman had to apply to hold the bat firmly in its place would be. देखो, बॉल मूव कर रही है, ओके? ये मेरा बैट है, मैंने इस बॉल को हिट किया और ये इसने अपना पाथ रिट्रेस कर लिया है. इट इज अगेन कमिंग बैक इन द सेम पाथ, ठीक है? और दूसरी बात, अगर आपका कोलिजन इलास्टिक है तो मतलब इसकी वेलोसिटी इन कमिंग इज इक्वल टू वेलोसिटी इन गोइंग इफ द बैट इज हेल्ड स्ट्रेट, ठीक है? इसमें वाली कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है कि आपको बैट की स्पीड भी कंसीडर करनी पड़े. इसमें ये माना जा रहा है कि बैट इज हेल्ड स्ट्रेट, ओके? सो ड्यू टू इलास्टिक कोलिजन द वेलोसिटी ऑफ द बॉल कमिंग इन is the same as the velocity of the ball going back to the bowler, right? So what do we have as a formula? F is nothing but change in momentum with change in time, right? Delta p by delta t. तो p initial, if I ask you, या डायरेक्टली भी कर सकते हैं, एम वी माइनस यू बाय डी टी. ऑलराइट, क्वेश्चन मास दिया हुआ है, स्पीड दी हुई है, हेल्ड फर्मली किलोमीटर पर आवर में, तो उसको कन्वर्ट कर लेंगे. ओके, इट्स नथिंग.
तो वेलोसिटी अगर निकालें तो कितनी हो जाएगी 126 126 126 into 5 by 80 is nothing but 87 35 meter per second. Okay, velocity initial going towards the bat is 35 and going back is minus 35. Retraces its path with the exact same velocity. So m 35 minus of minus 35 in time it is given 0.001, right? Mass is also given 150 grams. So 150 into 10 to the power minus 3 times 70 divided by 1 into 10 to the power minus 3. 0.07535 So it can be also written as like this. This option is correct. Option number C. You got this question, right? It was a simple question basically. इसमें थोड़ा सा बस एक एक्स्ट्रा चीज मैं बताना चाहता हूँ. अगर बॉल आ रही है ऐसे with a speed v, okay, and our bat is moving with some speed vb. Let's say this is as v1, this is as v2. Okay, so this is a ball which is moving with a velocity v. This is my bat which is moving with a velocity v2, and this bat hits this ball. So अगर इलास्टिक कोलिजन या कुछ दिया हुआ है तो आपको बस इतना पता है कि v approach is equals to v set, राइट? सो इसमें v अप्रोच क्या हो जाएगा v1 प्लस v2 और फिर उसी के करस्पॉन्डिंग आप v सेपरेशन निकालोगे. इस क्वेश्चन में क्या था कि आपने बैट माना है स्टेबल है, सीधा रखा हुआ है जैसे बॉल होती है, जस्ट लाइक अ बॉल, सिंपल केस. बट अगर बैट भी मूव कर रहा होगा तो v1 प्लस v2 हो जाएगा v अप्रोच. v सेपरेशन के लिए फिर से वही सेम चीज हो जाएगी कि बॉल वापस जा रही है v3 से, लेकिन उसे फॉलो कर रहा है बैट, जो फॉलो थ्रू होता है बैट का वो भी होता है, तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन हो जाएगा v3 माइनस v4. तो एक इक्वेशन आपको ये मिल जाएगी एक्स्ट्रा और दिस, और उसके बाद आप क्वेश्चन के लिए प्रोसीड करोगे. इस केस में ये था कि आपने माना है कि बैट आपका स्टेबल है, नो फॉलो थ्रू, नो कमिंग इन कांटेक्ट, इट इज जस्ट एक्टिंग लाइक अ बॉल. सो इस सिंप्लिसिटी के लिए था. लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. A man of mass m standing at the bottom of the staircase of height L climbs it and stands at top. Okay, this is a staircase. So what do we have here? Height L climbs it and stands. Work done by all force phenomena to the rising potential energy mgl. Rising potential energy equal to all forces minus 0. राइट. सो यहाँ पे मैं देखूं अगर मैन खड़ा है, सो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? 0. इसको मैंने बेस लाइन माना है जहां से मैं पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कर रहा हूँ. ये मेरी रेफरेंस लाइन. मैंने बताया ना पोटेंशियल एनर्जी इज कैलकुलेटेड विद रिस्पेक्ट टू अ रेफरेंस लाइन. यहाँ पे उसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 है और काइनेटिक एनर्जी 0 है बिकॉज इट इज एट रेस्ट. ओके, नाउ ही मूव्स और फाइनली वो टॉप पे पहुंच जाता है. टॉप पे उसकी पोटेंशियल एनर्जी है, मैं मानता हूँ उसकी एनर्जी है ई, और काइनेटिक एनर्जी इज अगेन 0. व्हाई? काइनेटिक एनर्जी 0 because he is again at rest at the top. So total energy is getting increased. Total energy is getting increased. That means that कहीं से उसने वर्क किया होगा. ओके, कुछ उस पर वर्क हुआ होगा, कुछ उस पर एनर्जी प्रोवाइड हुई होगी, लेकिन जो वो वर्क है वो मैन कर रहा है. This total energy increase is done by the man. This is work done by the man. ठीक है. यहाँ पे क्या दिया है? वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस ऑन द मैन इज इक्वल टू द राइज इन पोटेंशियल एनर्जी. गलत. जो बाहर से फोर्सेस लग रहे हैं उनके अगेंस्ट मैन काम कर रहा है. बाहर से फोर्स क्या लग रहा है? mg, जो उसको ऊपर नहीं जाने दे रहा है, mg. तो मैन इज डूइंग वर्क अगेंस्ट दिस फोर्स. दैट इज व्हाई mgl करके वो अपनी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ा रहा है. फाइनली 3 mgl कर रहा है एट द टॉप after clearing 3 staircases, right? So this option is wrong. Work done by all the forces on the man is 0. This one is correct. ठीक है. वो वर्क तो लगा, बाहर से फोर्स लगा रहे हैं mg, ठीक है, लेकिन वो मैन पे कोई वर्क नहीं कर रहे हैं. यू आर गेटिंग माय पॉइंट, राइट? तो उसकी वजह से ऐसा होता है.
जैसे कि आप ये भी कह सकते हो कि भैया ये तो नेगेटिव वर्क लगा रहे हैं। जैसे फोर्स फोर्स ऐसे लग रहा है, उसकी डिस्प्लेसमेंट भी हो रही है, तो उसमें नेगेटिव वर्क होगा। बताता हूँ क्यों नहीं। फोर्स इस डायरेक्शन में और मूवमेंट इस डायरेक्शन में है ना। लाइक दिस इज माई स्टेयरकेस, दिस इज माई मैन, gravitational force is like this, his displacement is upwards like this। तो फॉर्मूला क्या होता है इसका? फॉर्मूला हो जाएगा एम जी एल कॉस थीटा। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट होता है ना। व्हाट इज वर्क डन? वर्क डन इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स टाइम्स डिस्प्लेसमेंट। तो एम जी एल कॉस थीटा हो जाएगा ना। थीटा कितना है? 180 डिग्री। व्हाट इज कॉस 180? जीरो। Cos 180 degree is equals to zero. That is why the work done by all the forces on the man is equal to zero. नेगेटिव वर्क भी नहीं हो रहा है। मतलब ये भी हो सकता था कि वो कहते कि नेगेटिव वर्क हो, तो वैसा भी नहीं। और देखते हैं सी। वर्क डन बाय द ग्रेविटेशन फोर्स ऑन मैन इज mgl। बताओ, अभी मैंने यहाँ पे दिखाया, इट इज जीरो। इट इज नीदर mgl, इट इज नीदर माइनस mgl, both the cases are wrong। Reaction force from a step does not do work because the point of application of the force does not move while the force exists। This is correct। ओके, सो इसके लिए ऑप्शन बी। व्हाट इज दिस? इसके लिए ऑप्शन बी एज वेल एज ऑप्शन बी एज वेल एज ओ, लीव इट। इसके लिए ऑप्शन बी एंड ऑप्शन डी आर करेक्ट। व्हाट इज ऑप्शन डी सेइंग? द रिएक्शन फोर्स फ्रॉम अ स्टेप डज नॉट डू वर्क बिकॉज द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स डज नॉट मूव व्हाइल द फोर्स एक्सिस्ट। बिल्कुल करेक्ट। आपका जो वर्क होता है वो उस पॉइंट, मैं अगर वर्क कैलकुलेट कर रहा हूँ तो मैं अगर फोर्स लगा रहा हूँ इस पॉइंट पे, तो मैं सिर्फ इस पॉइंट पे तो डिस्प्लेसमेंट देखता हूँ डी। ठीक है, उसी को तो मैं कहता हूँ मेरा वर्क डन इज एफ डॉट बी। लेकिन जो आपका रिएक्शन फोर्स है वो आपके पैर पे फोर्स लगा रहा है, लेकिन आपके पैर का डिस्प्लेसमेंट तो हो ही नहीं रहा, वहीं पे खड़े खड़े आप ऊपर चढ़ गए। फिर आपने यहाँ पे पैर रखा, रिएक्शन फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है, फिर आप खड़े खड़े ऊपर चढ़ गए। इसलिए रिएक्शन फोर्स का कोई वर्क नहीं हो रहा है, क्योंकि पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स जो है वो उसी जगह पे स्टेबल है, उसकी कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रही है। व्हाट माय पॉइंट? लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। So the next question is, a bullet of mass m fired at 30 degree to the horizontal leaves the barrel of the gun with a velocity v. The bullet hits a soft target at a height h over the ground while it is moving downward and emerges out from half of the kinetic energy it had before hitting the target. These the following statements are correct. All right, all right. So let's see. Question क्या कह रहा है? Initially, let's say I fired a gun. Okay, v initial velocity. It is going. V initial is given as v. It is moving like this. यहाँ पे उसने टारगेट को हिट किया। दिस इज माई टारगेट। टारगेट हिट करने के बाद जब वहां से वो निकला, ओके, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी हाफ हो गई। ये बात समझ आ रही है? काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे उसकी हाफ हो गई है। द बुलेट हिट्स एट हाइट एच ओवर द ग्राउंड, और ये हाइट थी एच, यहाँ पे उसकी काइनेटिक एनर्जी हो गई है हाफ। Right, it came downward and emerges out with half of the kinetic energy it had before hitting the target. Only statements are correct in respect of bullet after it emerges out the target. So निकालते हैं। तो हम लोग के पास के फाइनल जो है जब वो इमर्ज कर रहा है वहां से, वो है के इनिशियल का हाफ। इतनी बात तो समझ आ गई। और के इनिशियल क्या है? हाफ एम वी स्क्वायर। अभी हम लोग को इतना पता है, आगे देखते हैं। ठीक है, सो वी फाइनल और वी इनिशियल में हम लोग यहाँ से कोई रिलेशन निकाल सकते हैं क्या? हाफ एम वी फाइनल स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाफ टाइम्स हाफ एम वी इनिशियल स्क्वायर, एम हाफ एम हाफ वी फाइनल इज वी इनिशियल बाय अंडर रूट टू। ओके, so what is v final? V final is what v initial, v final is 0.707 times v initial। ठीक है, इतनी बात अभी हम लोग को ध्यान रखना है। ये फाइनल और वी इनिशियल उसकी बात कर रहा हूँ, यहाँ पे जब वो टारगेट को हिट करके बाहर निकल रहा है वहां पे ये फाइनल है। राइट, सो लेट्स मूव ऑन। हाँ, यहाँ से हम लोग ये ऑप्शन तो खैर निकाल सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ द बुलेट विल बी रिड्यूस टू हाफ इट्स इनिशियल वैल्यू। नहीं, ये गलत है। क्यों नहीं हो रहा है? बट ऑप्शन ए गलत है। राइट,
So option A is wrong. What about option B? Let's see. Velocity of the bullet will be more than half of its earlier velocity. V final is more than half of V initial. So option B is correct. Option C. The bullet will continue to move along the same parabolic path. ऐसे कैसे? ये पैराबोलिक पाथ अगर ऐसा था उसका इनिशियली, लेकिन आपने बीच में अब यहाँ पे एक सॉफ्ट टारगेट लगा दिया, तो वहां पे जब उसकी काइनेटिक एनर्जी हाफ होगी तो पहले ही नीचे आ जाएगा ना। ये भी गलत है। डी, द बुलेट विल मूव इन अ डिफरेंट पैराबोलिक पाथ, करेक्ट। ई, द बुलेट विल फॉल वर्टिकली डाउनवर्ड्स आफ्टर हिटिंग द टारगेट, नो। वर्टिकली डाउनवर्ड कब आता है? जब उसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाती है, जब उसकी वी फाइनल जीरो हो जाती, तो वर्टिकली डाउनवर्ड उसके पास जो एनर्जी, जितनी भी एनर्जी होती है वो सारी वो पोटेंशियल एनर्जी ऐसे ड्रॉप कर देता है। ठीक है, तो दैट इज ऑल्सो रॉन्ग। इंटरनल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द टारगेट विल इंक्रीज, करेक्ट। ये जो वी फाइनल आपका वेलोसिटी में जो डिक्रीज आया है, काइनेटिक एनर्जी जो हाफ हुई है, तो बाकी की हाफ काइनेटिक एनर्जी कहाँ गई होगी? एनर्जी तो कंजर्व रहती है ना। टोटल एनर्जी थी ई, ऑलराइट। ई में कुछ थी काइनेटिक, कुछ थी पोटेंशियल। टारगेट आपका रखा था सम पोटेंशियल एनर्जी पर, ठीक है। तो आपने क्या किया, उसको बुलेट मारी, आपकी काइनेटिक एनर्जी हाफ हो गई, तो आपकी टोटल एनर्जी डिक्रीज हो गई। तो वो एनर्जी अगर आपके बुलेट के पास अब नहीं है तो कहीं तो गई होगी। सो दैट एनर्जी गोज टू द पार्टिकल्स इन द टारगेट जिनको बुलेट ने डिस्टर्ब किया है। सो ऑप्शन एफ इज ऑल्सो करेक्ट। सो इस क्वेश्चन में बी, डी एंड एफ आर द करेक्ट ऑप्शंस, ओके।